I'm going to tell you 10 productive things that you can do when you have no money, and we are starting right now. Hello everyone, my name is Dr. Taha Khan. Welcome to my YouTube channel where I share with you clinic and exam related productivity tips and strategies. If this is your first time here, start now by subscribing and hit the bell icon so that you don't miss anything. So you are stuck at home, probably bored and left with no money. What you need is a list of fun things that you can do without spending money. Things that are fun, things that are productive, that give you a real sense of achievement. You can do so many productive and useful things that will improve your happiness, your finances, and can also be fun. So here are the 10 things that you can do that do not require your money, but they do require your energy and time. The first thing that you can do is create a survival budget. Means create a list of things that you absolutely need in life. मतलब कि you are only focusing on your needs and not wants. Make sure you are only paying for the membership or subscription or any product that you are actively using and you can justify the expense to yourself. And ये कोई भी subscription लिया हुआ है, ask yourself these 3 questions. First question, do I get value from this product or from this service? Second question, can I get it for cheap? And third question, do I need it now? या ये बाद में भी लेने से चल जाएगा. And any subscription that doesn't qualify these 3 questions, cancel them. So ऐसा एक list बनाओ and see what is your survival budget. And of course ये सबका अलग अलग होता है. So don't compare yourself with anyone else. What you need to survive will most probably be different from your friend. The second thing that you need to do is develop your personal finance knowledge. You see, the more you know about finance, the more you know about money management, the more you will be able to make the most of your money. You will be able to save your money. You will be able to grow your money. You will be knowing about investing and all these stuffs. And these knowledge will help you improve your financial situation. So the question is, how do you improve? How do you know about finances? The first go-to thing is your books. बहुत सारे finance related books available हैं. Get hold of these books and almost all books are quite good. So वहाँ से knowledge gather कर सकते हो. And the second most important place, my go-to place is YouTube. You can have so many information on finances, people, important people, big people, knowledgeable persons talking on finances. So search on YouTube on these finances and you will get a lot of channels. I will list down few channels that I usually watch. You can find those channels in the description of this video. The next thing that you can do is have a bill lowering session. Now pull out all your recurring bills. हमें जितना भी recurring bills देना पड़ता है, जैसे कि इंटरनेट बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गया, देन इंश्योरेंसेज हो जाता है, कार इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो रिकरिंग एक्सपेंस में हमारा आता है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स and shop around the internet to see if you can get these things any lower. This includes our subscription also. कुछ services हम लोगों ने लिए हुए हैं. So just shop around the internet to check कि अगर ये हमें कुछ कम प्राइस में अगर ये हमें मिल सकता है कि नहीं. Because I'll share experience with you कि जो अभी just recently जो मेरे साथ हुआ. Now I own a Maruti Baleno. एंड इसका इंश्योरेंस अराउंड मई में होता है. सो मारुति पीपल मीन्स दे स्टार्टेड कॉलिंग मी अराउंड 2 months बैक कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू करने का टाइम आ गया है, सो काइंडली आप रिन्यू. तो फिर आई आस्क्ड देम कि ठीक है आप इंटरनेट लिंक वगैरह शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, तो आई विल गो ऑनलाइन एंड पे. सो व्हाट आई नोटिस्ड कि द लिंक दैट दे हैड सेंट मी, उसमें अराउंड कुछ 10, माई कार इज अराउंड 5 years old. अभी 5 years old हो गया है. लास्ट ईयर आई हैड पेड फॉर माई कार इंश्योरेंस अराउंड 10,900 rupees. Yeah, right, about 11,000. And the link that they had sent, that was for around 10,400 rupees. Now एक साल में, given that my car is 5 years old, only 600 rupees कम करके, so ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था कि like इतना ज्यादा इंश्योरेंस कैसे है. And another thing that struck me was that मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी सेम वही बलेनो है एंड उसको अभी 2 साल हुआ है लिए हुए, एंड उसका जो इंश्योरेंस अमाउंट है दैट वाज 11,000. तो मुझे लगा कि अभी 2 साल पहले उसने 11,000 दिया है फॉर इंश्योरेंस, एंड दीज पीपल फॉर माई 5 year old कार दे आर आस्किंग 10,400. So how come is this possible? So what I did, I searched online and कि अगर इससे मुझे कम में इंश्योरेंस मिल सकता है कि नहीं, एंड फाइनली आई फाउंड अ इंश्योरेंस जो मुझे 9,400 रुपीज में मिला है. सो आई एंडेड अप सेविंग अराउंड 1,000 rupees. So you can do these things. If you're not searching actively, then chances are कि you will end up paying more. So have this session, this bill lowering session, and chances are कि कुछ पैसे you will be able to save. The fourth point is track what you spent last month.
recording what you are spending every month is really an eye opener. Now you may feel or you may believe कि I only spend on necessary items, only mandatory items, फालतू का मेरा कोई भी खर्चा नहीं है. But still recording अपना expense को record करना is always a good habit. एंड ये लिख कर भी कर सकते हो द क्लासिक ओल्ड वे, और यू कैन डू इट स्मार्टली. कोई भी एक एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप वगैरह कुछ इंस्टॉल कर लेना एंड दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस, वेयर योर एक्सपेंसेस आर गोइंग. एंड बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू नो व्हाट ऐप आई यूज, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई टू इट. So download the app and whatever you are spending, just record it कि ये मेरा expense कहाँ जा रहा है, यूटिलिटी में जा रहा है, कार में जा रहा है, या फ्यूल में जा रहा है, या क्लोथिंग में जा रहा है, किड्स में जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में जा रहा है. Like wherever your expense is going, just track it and at the end of month just check कि जो भी expenses करा है, are you okay with it? Are you happy on how much you have spent on salon? Or are you happy with how much you have spent on food? And if you are overspending, then here is your evidence where your money is going. You can always find solutions to it to save your money and better manage your money. The fifth productive thing that you can do is take an online course. Now I usually say कि no matter किसी भी field से हो, you should always upgrade yourself. You should keep upgrading yourself. Always learn new skills. And the best place to learn new skills is YouTube, क्योंकि ये free भी है. And जो भी skill set videos ढूंढ रहे हो, chances are कि you will find videos on that. So learn new skills. एंड अगर कहीं सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, सो लाइक आई वाज जस्ट सेइंग कि शॉप अराउंड कि वो स्किल सेट कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में, किसी दूसरे वेबसाइट में एट ए लोअर कॉस्ट में मिल सकता है कि नहीं. And my personal favorite is YouTube because whatever skills, new skills or additional skills that I have taught myself is from YouTube. That is why I spend a lot of time on YouTube, learning new things, learning new tech advices, learning new technical things. So since you are free now, take online courses on learning skills and choose skills जो आपको benefit करेगा in future. Point number 6 is organize your online presence. Now college time में you might have uploaded some photos जो उस वक्त में थोड़ा cool लगता होगा, या फिर you might have uploaded photos under the influence of alcohol, लेकिन अभी वो थोड़ा सा अजीब लगता है रखने में. So and these photos are always available. These photos are permanently available for your friends, for your families, for your kids, until and unless you actively go and delete these photos. So now would be a good chance to do so, especially when you are searching for jobs, because chances are that your employer is gonna search you online. The next thing that you can do is consider turning your hobby into a cash machine. Now बहुत सारे hobbies ऐसे होते हैं, बहुत सारे skills ऐसे होते हैं that has the potential to earn you some extra money. So अगर ऐसा कोई skill है आप में, and these kind of things can be done from home and without investing any real money, all you need to do is invest some time into it to master that skill. And once you have mastered these skills, you can always monetize them. So if you know these kind of skills, then थोड़ा सा time invest करो, थोड़ा सा दिमाग invest करो कि how you can make some extra money utilizing these skills. जैसे एक यूजर ने one of my previous videos में comment करा था that she can draw portraits very well now, and earlier she used to do this but then she left it. So these kind of skills, like if you can draw portraits very well, you can always reach out to people who want portraits to be drawn, and if you are good at it, you can earn few extra money from it. The next point is sell your stuff. See, unless you are a minimalistic, you are likely to have stuff hanging around your house that you no longer use. जैसे कोई पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जो पहले यूज करते थे अभी नहीं करते, या कोई साइकिल, ऐसा साइकिल है पड़ा हुआ जो पहले चलाते थे अभी नहीं चलाते, मोबाइल फोन्स है जो पहले यूज करते थे अभी नहीं करते हैं. द पॉइंट इज कि यू नीड टू डीक्लटर योर हाउस, वरना अगर ये एक्टिवली नहीं करेंगे ना, अगर देखो बैठ के अगर सोचोगे, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड योर हाउस दैट यू कैन सेल ऑनलाइन. सो द मेन पॉइंट इज टू डीक्लटर योर हाउस. एंड ये सारी चीजें ऑनलाइन में तो कहीं पे भी निकाल सकते हो. फेसबुक का मार्केट प्लेस आ गया है, दैट इज अ वेरी गुड प्लेस. देन OLX हो गया, eBay हो गया, Gumtree हो गया, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो सेकेंड हैंड या यूज्ड आइटम्स को लिस्ट करते हैं. सो रिमूव दीज अनयूज्ड आइटम्स फ्रॉम योर हाउस and it can also get you few extra money that you can invest on useful items that you require now. The next thing that you can do is write an ebook, and you can host these ebooks on Amazon, the go-to place for anyone who wants to buy anything. And chances are that people are already searching for an ebook on your niche, on your topic, on your category, on your skill.
So do a bit of research and see what people are searching for. And if you are good at that skill या फिर उस टॉपिक पे या उस कैटेगरी पे अगर ई बुक लिख सकते हो, then do that. And ई बुक लिखना is comparatively much easier. ये हार्ड कॉपी बुक के तरह इट डजेंट नेसेसरीली नीड के 200-300 पेजेस के होने चाहिए. इट कैन बी एज स्मॉल एज 20 to 30 पेजेस. सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्किल एंड यू आर गुड एट इट, देन यू कैन राइट एन ई बुक एंड ऑलवेज लिस्ट इट ऑन Amazon. The last productive thing on the list that you can do is investigate work from home opportunities. If you are interested in flexible work from home and making money from home, then why not spend some productive time investigating the different ways you can do so. And one way that I can think of right now is proofreading. मीन्स प्रूफ रीडिंग में क्या होता है ना कि कोई ऑथर है या कोई ब्लॉग साइट है जो फाइनल बुक अपना पब्लिश करने वाला है, एंड बिफोर पब्लिशिंग दैट बुक दे नीड अ प्रूफ रीडर टू जस्ट गो थ्रू द फाइनल वर्जन ऑफ द बुक फॉर एनी एरर, फॉर एनी मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ये सब चीज के लिए पीपल नीड प्रूफ रीडर्स. एंड आई हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑन दिस प्रूफ रीडिंग टॉपिक कि कौन कौन से वेबसाइट्स हैं दैट दे हायर पीपल फॉर प्रूफ रीडिंग, हाउ मच दे आर पेइंग, हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम प्रूफ रीडिंग. So if you want me to make a separate video on this proofreading, then let me know in the comment section below. And if I receive a good many comments, then I'll surely think of making a separate video on this topic. So these were the 10 productive things that you can do when you have no money. Let me know out of these 10 things, which one you like the most. Press the like button if you like the video. Share this video with a friend who you think might get help from this video, and I'll see you in the next video.